Om Shanti. Sister Judy. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. Thank you. Good morning. You are most welcome. Or good evening. This is Baroda family, and you are aware with this. Okay. So we are happy that we are going to listen to your wonderful experience today. And let me introduce our sister Savita. Okay. We know each other. We are good friends. I know you are knowing everybody. Oh my goodness. Hi. Yeah. We were in the same team in NCCC retreat. That's So today right. she is our translator. Okay. So actually Savita Ben is our elder sister and younger sister, both. You know, Sister Judy, I am asking you. She is our elder sister and she is our younger sister. How? Because she is Madhuban Nivasi. So at that way, she is our elder sister. And age-wise, physical age-wise, she is our younger sister. So both relations we have. And I would like to introduce Dr. Jain Bhai. Dr. Saab, unmute karna aap. Sister Judy, this is respected Dr. Jain Bhai and Dr. दूसरे Jain Bhai. जुड़ी बेन है हाँ ये कैलगरी से है डॉक्टर साहब वो जूडी बेन जूडी जॉनसन देर आर वो तो ख्याल आ गया वेलकम there are two sister Judy one is Judy Johnson and we had her experience last month and this is sister Judy and she is from Calgary. So today she is going to deliver Sister Judy. This is Dr. Jain Bhai and Dr. Jain Bhai is in this knowledge since 1968 and he is fortunate to meet Brahma Baba also and Brahma Baba permitted him to marry for their holy marriage with Champa Ben. Okay. So Champa Ben is not available right now because somebody has come to center. So she is busy with some other service. So Dr. Saab, आप भी welcome कीजिए. This name suggests combined in our Hindi. Judy means combined. बाप और दादा, बाप और बच्ची. You and father, godfather, you are combined. So this is a natural way of remembering Bap Dada automatically. So nice to see you in a combined group. But Dr. Saab, today she is Judy with Baroda Karilibag family. Judy. Okay. Yes, that is also right. Okay. Okay, sister. Or Judy with Savita Ben also. जी सविता बहन भी चार चांद लगाती है भाई और बहनों ठीक है ना सविता बहन भी इस सभा में चार चांद लगाती है तो लगाता है आप दोनों बहनों का बहुत स्वागत है और बहुत अच्छी बात ये है ड्रामा प्लान अनुसार कि जो भी विदेशी आते हैं उनका ट्रांसलेशन करना होता तो सविता बहन उनको जानती भी है तो वो भी अच्छी एक फीलिंग क्रिएट करती है वो अननोन फेस नहीं फैमिलियर फेस लगते हैं सो ये भी बहुत अच्छी ड्रामा प्लान अनुसार ये प्लानिंग है Acha, sister, you may start your experience now. All right. First, I have to say, absolutely wonderful to join you today. Very sweet to meet all of you. Lots of love, waves of love coming to you from Canada. तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मीठा लग रहा है आप सभी को कनाडा से बाबा की बहुत सारा याद प्यार है And I was very, very touched by Dr. Jant's sharing, actually, because just before leaving India this year, in March, I was returning to Canada from ORC, Om Shanti Retreat Center. तो डॉक्टर जयंत भाई से भी मिलके अच्छा लगा उन्होंने जो शेयर किया वो बाबा की पालना उन्होंने लिया हुआ है तो इस बार हम मार्च में इंडिया में थे ओआरसी से कनाडा रिटर्न हुए हैं It was the silence retreat and one of the last sessions we had was with Vishnu and he was sharing about signs of the complete stage.
So last session was with whom? Brish Mohanbai. ओके तो मार्च मास में जब ये ओआरसी से कनाडा रिटर्न हुए तो ओआरसी में हर साल इन लोगों का एक साइलेंस रिट्रीट होता है, तो उसमें लास्ट सेशन ब्रिजमोहन भाई जी का था. उन्होंने उसमें कंप्लीट संपूर्ण स्थिति की जो साइंस है उसके बारे में समझाया था. The session was on the phone, and so I would be listening to him on the telephone and repeating everything he shared over the mic so all could hear. ओके तो वो जो सेशन उन्होंने लिया था वो फोन पे उन्होंने कराया था, और मैं अभी आप सभी से उन्होंने जो बातें शेयर की थी अंतिम संपूर्ण स्थिति की साइंस उसके बारे में मैं बताऊंगी. And he decided, learning that the soul he was speaking to on the phone, the physical name was Judy, he gave an in-depth explanation of the meaning of Judy. ओके जैसे आप लोगों ने अभी जूडी शब्द का अर्थ बताया, तो ब्रिजमोहन भाई जी ने भी जूडी जो वर्ड है उसका बहुत गहराई से अर्थ बताया था. And it's exactly as was shared, but he went on, and that means to be joined and separated, joined and separated. तो ब्रिजमोहन भाई जी ने जूडी जो शब्द है उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे जॉइन होना है, जुड़ना माना, और सेपरेट होना है, जॉइन होना है, सेपरेट होना है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था. I wasn't sure if he would ever get to the theme of the class. He kept talking about Judy. ओके तो जो इनका रिट्रीट का जो टॉपिक था वो थोड़ा साइड में चला गया, और ब्रिजमोहन भाई जी ने ज्यादा जो जूडी शब्द है उसके बारे में ही बताना शुरू कर दिया. But Baba has shared, this is somewhat the story for those of us in foreign lands, that it looked like we had been separated from Bharat, but he says you went there for service to bring souls back to Bharat. So I like joined and separated because it sounds like a bridge. It looks like you're going away, but you're actually helping souls to reconnect. तो इनको लगता है कि भारत से बाहर हमने जन्म लिया है, लेकिन बाबा कहते हैं आप लोग वहाँ सेवा के लिए गए हो. बिछड़ तो गए हैं लेकिन वहाँ सेवा अर्थ गए हैं, तो एक ब्रिज बन गया ना, जिसके बिछड़ना और सेवा करना फिर मिलना, उसके बीच में एक ब्रिज बन जाता है, तो वो ये अनुभव करते हैं. So a little bit about this Judy. There's actually 3 Judys in the Americas, so it's very, very confusing, right? Mohini Didi, she says Judy, we're not sure. There's Judy Johnson, this Judy, and a Judy Rogers, so we don't know. तो 3 जूडी है यज्ञ में, तो अमेरिका में खास करके मोहिनी दीदी जब बोलती है जूडी माना कौन सी जूडी, तो जूडी जॉनसन है, जूडी रॉजर्स है, और ये जूडी है, तो 3 हैं. But for this Judy, there was very, very sweet points suggested to share on, and all of them kept pointing to the same theme, which Baba calls karma yogi. In other languages we say integration, but it's really karma yogi. तो जो कर्म योगी जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं, तो उस टॉपिक पर जैसे गहराई में अभी ये बताएंगे. जैसे जैसे रिट्रीट हुआ था तभी भी इसी टॉपिक पर गहराई से चिंतन मंथन चला था. And that really started early, even before coming to Baba. For me, in this birth, I was born in this birth in Calgary, Canada. ओके तो माना कहाँ ना कहाँ जो कर्म योगी शब्द है वो पहले से ही इनको था अनुभव जीवन में, और इनका जो लौकिक जन्म है वो कैलगरी जहाँ पर अभी ये है कनाडा में, वहाँ पर ही हुआ था. And it was born to one parent in a black body, one parent in a white body, one parent artistic, one parent, the other parent academic, one parent was tall, the other parent was short. So it seemed very separate, but it was blended together. Yeah. तो Good luck. तो इनके जो पेरेंट्स थे वो भी जैसे अलग अलग थे. जैसे एक
उनका जो एक का बॉडी था वो ब्लैक था, एक वाइट बॉडी वाले थे, और एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एक बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले थे, एक लंबे थे, एक इनका हाइट कम था, तो अलग अलग ऑलरेडी था, तो उनका एक ब्लेंडेड एक अनुभव उनको ज्ञान में आने से पहले ही मिला था, इंटीग्रेशन जो हम कहते हैं। बहुत अच्छा. So I really from early understood this idea of separate worlds coming together. तो उनको उससे ये अनुभव हुआ कि जो दुनिया बिखर गई है वो साथ में आ रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ रहकर उनको ऑलरेडी अनुभव हो गया था कि अलग अलग होते हुए भी कैसे एक हो गए हैं। तो सेपरेट वर्ल्ड, दुनिया अलग अलग होने के बावजूद भी एक है, उनको अनुभव हो गया था पहले से ही। So in looking for God, I was looking, or truth, I was looking for a truth that was practical, not one that was just in the temples or the churches, but something that had to do with day-to-day, that blended the sacred with day-to-day life. तो इन्होंने जब परमात्मा की खोज शुरू किया, इनको ऐसे नहीं कि केवल कोई चर्च में या टेम्पल में जो परमात्मा होते हैं वो नहीं, एक प्रैक्टिकल, जो एवरीडे की लाइफ में हमसे कनेक्ट हो, एवरीडे की लाइफ में अनुभव हो, उस वो जो सच्चाई हो, जो प्रैक्टिकल है, उसको वो ढूंढ रहे थे। So whenever and this of course is what Baba brings, liberation in life, right? Jivan Mukti, it's not just liberation, but liberation in life, purity in action. या वही तो बाबा केवल मुक्ति नहीं देते हैं ना, जीवन मुक्ति देते हैं, वो भी प्रैक्टिकल है। तो उसी के साथ इनको पहले से ही प्रैक्टिकल में बाबा को ढूंढ रहे थे। So when I listened to Baba speak, as I'm sure is the case for all of you, but I remember the first day, lesson 1, and the sister shared, "You are a soul." What it would happen in my head was I would hear the significance. So what I heard was, this is a place where you get self-respect back. Even though it said you are a soul, I heard self-respect, Swaman. तो जैसे ही ये पहली बार जब ज्ञान में आए, शुरू में जब इनको सिस्टर ने, जिन्होंने इनको ज्ञान दिया, उन्होंने कहा कि आप एक आत्मा हो। उन्होंने कहा आप एक आत्मा हो, लेकिन इनको ये अनुभव हुआ कि सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान जो शब्द है, उसका अनुभव हुआ। So Baba grabbed me that way. He would speak and I would hear what I had been looking for, what we call a happy life. So not that we escape from life, but that I could create a happy life and therefore be part of creating a happy world. तो बाबा ने इनको जैसे पकड़ लिया अच्छे से, इनको लगा कि जिसकी मैं सर्च ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया है, खुशी का जीवन। ऐसे नहीं कि केवल अपने आप में खुशी का अनुभव, लेकिन खुशी की जो दुनिया हमको लानी है, उसका भी अनुभव। And there's actually something Baba had shared that stayed with me almost as a laksh, an objective in my Brahmin life. He said, when you learn to combine or balance silence and activity, you will be powerful. तो इनको लक्ष्य क्लियर हो गया जैसे ही ज्ञान में आई। एक बात हमेशा इनकी बुद्धि में ये रही कि साइलेंस के साथ साथ एक्टिविटी, जो हम सेवाएं करते हैं, उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वो बात इनको शुरू से अच्छा लगा और इन्होंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया। So I might shock you with the following sharing, but it will illustrate. I still work, I still have Lokik work, and I work as a fitness instructor. For Baba, we do graphic design, but Lokik work is fitness instructor. Okay. आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा सुनकर कि अभी भी मैं अपना लौकिक जो करती हूँ, और मैं लौकिक में जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, जो एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, उनका लौकिक जॉब है। ये बाबा के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग का काम है वो करते हैं, लेकिन इनकी लौकिक
जो जॉब है वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर का है. So no, I won't have you do any push-ups or sit-ups. That's not what I'm telling you. But when I say, in the Brahmin family, I'm a fitness instructor, they think I teach Hatha Yoga. या यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर हम कहते हैं ना कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, तो ब्राह्मण फैमिली में समझने लगते हैं कि हठ योगा सिखाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज सिखाते हैं. How many think I teach Hatha Yoga? आप लोगों को कितनों को लगता है कि हठ योगा सिखाते हैं? जो योगा होता है ना, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, आपको कितनों को लगता है कि हठ योगा सिखाते हैं? Anyone think so? किसी को लगता है कि हठ योगा सिखाते हैं? Because I don't. ये नहीं सिखाते, हठ योगा नहीं सिखाते हैं सिस्टर. I teach very extreme fitness, so jumping up and down and crazy. I will not give a demonstration. You will not? No. तो सिस्टर जो है एक्सट्रीम फिटनेस, हमने भी इनका देखा हुआ है. वी हैव आल्सो सीन हाउ यू डू द एक्सरसाइज एंड ऑल. हमने भी देखा हुआ है कि दोनों बहनें इतनी दुबली पतली है, इतने फिट है, बात मत पूछिए. तो एक्सट्रीम फिटनेस माना जो जंप करना है, कैसे बॉडी को अच्छे से मेंटेन करनी है, वो सारी चीजों को सिखाते हैं. But Baba has shared that it too can be spiritual or have silence. Still there can be that inner silence. वो सब करते हुए भी हम इनर साइलेंस में रहे, शांति में रहे, वो भी पॉसिबल है, बाबा ने कहा है. And so I am remembering one scene where a class was being taught, and there was a soul in the class who would get what's called epileptic seizures. So these are quite, I don't know if souls are familiar, it's a medical condition where they lose consciousness and the body is shaking a lot. Okay. तो एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसको कुछ ज़्यादा ही बीमारी की कंडीशन थी जिसमें बॉडी वगैरह शिवरिंग होता है, कांपता है. And so teaching the class, it's very difficult for souls to see that. But this soul had requested, if that happened, to keep the class going, address the situation, but keep the class going. And it's all very confusing. There's loud music. People are getting a little bit shocked. There's someone having seizures. You can imagine the scene. Yeah, so this was in your fitness class, not in Baba. Yeah, so इनकी जो लौकिक जो टीचिंग ये करते हैं ना फिटनेस की, उस क्लास की बात ये कर रहे हैं जहाँ वो व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया और उसका शरीर कांपने लगा. तो जैसे लोग बोलने लगे कि सिचुएशन को भी हैंडल करो और अपने क्लास को भी चलाते रहो, क्लास नहीं बंद करो, क्योंकि क्लास में ही सिचुएशन आ गया था. So at that moment, I have to respond. I have to care for the one having seizure, care for everyone else. But the first thought, as Baba teaches, was to go into silence. 1 second, go into silence. तो जब क्लास चल रहा है, इनका फिटनेस क्लास चल रहा है, किसी कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया, लोग बोल रहे कि आप क्लास को भी चलाओ, उस व्यक्ति को भी हैंडल करो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, लेकिन 1 सेकंड का जैसे बाबा कहते हैं ना, आप साइलेंस में चले जाओ, उसका इन्होंने अनुभव किया. This is how I'm going to learn Hindi. It's fantastic. So I just listened to Savita translate. And I remember, when we connect to Baba, it's like this incredible flood of peace comes into our being, yes? Even in a noisy, crazy situation, this flood of peace. Yeah. जैसे हम बाबा को याद करते हैं, साइलेंस में चले जाते, चाहे सिचुएशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन इनक्रेडिबल शब्द इन्होंने यूज किया, माना बहुत ही हमको गहन शांति का अनुभव होता ही है. And I don't quite remember thinking much. I just remember doing things. The limbs were moving, but feeling incredibly peaceful. Very peaceful as I had to hold the soul while they're having seizure, give directions,
etc. But I really just felt peaceful. इनके सामने बहुत बड़ी सिचुएशन थी, कोई व्यक्ति इतना बीमार हो गया क्लास में, लेकिन सब कुछ हैंडल करते हुए भी ये बहुत गहन शांति का अनुभव कर रहे थे. And after class, one of the participants who witnessed this came up to me when everyone else was gone and asked, "What just happened here?" तो मना इन्होंने इतना शांति से उस सिचुएशन को हैंडल किया. क्लास के बाद एक भाई इनके पास पहुंचा और पूछा आखिर हुआ क्या. And I said, "Well, so-and-so had a seizure." And she said, no, I know physically what happened, but why did it feel so different? उन्होंने कहा यहाँ पे क्या हुआ मुझे मालूम है, एक व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ गया, सब सिचुएशन आया, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये अलग था, अलग अनुभव था. वो क्या था? And she kept asking, why did it feel so peaceful? वो यही पूछती रही, सिचुएशन होने के बाद भी पीसफुल क्यों था, शांति वाला वातावरण क्यों था. And that idea of, we might say service, but just being, really has always appealed to me. You know, we can give lectures and classes, etc., but real serving souls, really supporting, is that integration, being spiritual as we respond. Yeah. तो हम लेक्चर्स देते हैं, भाषण वगैरह करते हैं, लेकिन बीइंग, हम खुद वो होना. हाँ, जैसे किसी की भी जब हम सेवा करते हैं, भाषण वगैरह करना तो एक एक्सटर्नल लेवल पर हो जाता है, लेकिन सचमुच वो स्थिति में रहकर बीइंग, हम खुद वो होकर जब हम सेवा करते हैं, फिर उसके द्वारा आत्मा को अनुभव होता है. So it's felt that the whole objective is to become a model for God, like a fashion model, but this is a spiritual model. तो मतलब लक्ष्य तो यही है कि जैसे हम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहाँ मॉडल रखे होते हैं ना, फैशन वाले मॉडल होते हैं, तो हमको यहाँ स्पिरिचुअल मॉडल बनना है. खुद हम जब मॉडल बनते हैं तो सेवा इजी हो जाता है. And you know, fashion models are paid a lot of money, but there is no way to count how much you will earn as a model for God. जो फैशन मॉडल होते हैं आजकल की जो दुनिया में, जो फैशनिंग के मॉडल करते हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह, उनको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन हम जब स्पिरिचुअल मॉडल बनते हैं, हमको भी तो, हमारी भी तो कितनी कमाई होती है, उसका अंदाजा भी नहीं है. So they walk down a runway wearing a designer's clothes, but we walk through life on this planet decorated by godly treasures, right? By that silence. वो जो बाहर की दुनिया के फैशन डिजाइनर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, वो लोग डिजाइनर्स जो डिजाइन करते हैं वो कपड़े को पहन के फिजिकली अट्रैक्ट हमको करते हैं दुनिया को, लेकिन हमारा जो डेकोरेशन है वो गॉडली डेकोरेशन जो बाबा हमको गुणों से करता है, उस डेकोरेशन को हम पहन करके मॉडल बन करके जाते हैं लोगों के सामने. And when a fashion designer is about to have a show, they have different clothes and they actually pick which model they want to wear which piece of clothing. तो जब फैशन डिजाइनिंग होती है, उनके पास सामने बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी वैरायटी चीजें होती है, तो एक पर्टिकुलर चीज को, मॉडल को चूज करते कि ये पहनकर मुझे आज फैशन डिजाइनिंग शो में जाना है. So Baba too, he has all of these beautiful treasures to share with the world, this spiritual clothing. And he says, each of my children has a speciality. So they each are going to model a different godly treasure through that speciality. No one else can wear that treasure. So each of us has a speciality. How will God use you in the world in a natural way? तो यहाँ भी बाबा हमको इतने खजाने देते हैं, जो स्पिरिचुअल क्लोथिंग है, स्पिरिचुअल हमारा जो आउटलुक है वो स्पिरिचुअल है, वो स्पेशलिटी के आधार पर बाबा देता है,
और गॉडली ट्रेजर बाबा हमको देते हैं, और कोई दुनिया में ये नहीं दे सकता है जो बाबा हमको देता है, जो खजाने बाबा हमको दे करके डेकोरेट करता है, हमको मॉडल बनाता है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है. So two things start to emerge. One is this speciality, which is your own unique, personal, close bond to Baba. Can you repeat that? Sorry. Yeah, two things will very emerge. deep. One is Yeah. the speciality, which is Yeah. your own unique, personal, close bond to Baba. तो जब बाबा हमको डेकोरेट करते हैं, खुद की जो स्पेशलिटी है वो बाहर निकलता है, नहीं तो हमको भी मालूम नहीं रहता कि हमारे में विशेषता है. तो ऐसे एक यूनिक शब्द इन्होंने यूज किया, एक पर्सनल शब्द इन्होंने यूज किया. तो जैसे बाबा हमको श्रृंगार करना शुरू करने लगते, तो सारी चीजें अपने आप इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं. It's why Baba says each child is more special or more beautiful than the next. इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक बच्चा एक दूसरे से विशेष है. It's his way of saying, I can't compare you with each other. We can't compare Sister Judy and Tanya. Exactly. You're so smart. इनकी जो बहन है ना, उनका नाम तान्या है, तो इन्होंने बोला कि दो लोगों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा आपकी और आपकी जो सिस्टर है ना तान्या, उनको अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. Savita Ben, she is also going to share her experience on 4th, okay? Good. Okay, yeah, I will be available. We'll test you and see if you can tell the difference. Okay. But the second thing that emerges, which is Maya at work, is we'll constantly try to make you doubt that speciality, that connection. या बहुत अच्छी बात इन्होंने सुनाया कि दूसरी बात जो इमर्ज होती है वो है माया, स्पेशली काम पर जब लोग ये काम करते हैं और डाउट आता है कि क्या सच में ये विशेषता मेरे में है. माया वो संशय लाती है. And that will especially happen on the field of service as we start to compare. जब हम सेवा के फील्ड में भी कंपेयर करना शुरू करते हैं, वही माया का असर भी वहां पर हो जाता है. One thing I did as a child was I ran in track and field athletics, and I was part of a relay team. So I'm not sure souls are familiar with a relay team. Running, no, it's a running, yeah. तो बचपन में ये जो रनिंग कंपटीशन होता है ना, रिले जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी ये हिस्सा लेते थे. So the relay team, 4 different runners, and they're situated around the track. Yeah. And the aim is to get a baton, a stick, from the start line to cross the finish line. The baton determines it has to cross the line, not the runner. If the runner crosses without the stick, it's not a win. It's the baton that has to ran all the way around the track. Yeah, we play. It's in India also. Okay. Yeah, I also did it in the school. Okay. So it's easy to explain now. तो जो रिले एक रनिंग कंपटीशन होती है, उसमें 4 लोग होते हैं और सबके हाथ में एक स्टिक होता है. वो स्टिक को लेकर के ही आपको दौड़ना होता है. तो 4 लोग मिलकर के वो स्टिक लेकर के एक थोड़े दूर तक जाएगा, वो स्टिक पास करेगा, फिर दूसरा दौड़ेगा, वो स्टिक पास करेगा. स्टिक के साथ ही आपको दौड़ना होता है, तभी जाकर के आपको प्राइज मिलेगा. वो एक रिले कंपटीशन है, रनिंग कंपटीशन, उसके बारे में समझा रहे हैं. So for Baba, the baton is the yagya, his task, right? His task has to come to completion. तो बाबा की दुनिया में बाबा के लिए वो स्टिक माना, वो लकड़ी माना कौन सा है, यज्ञ है. तो बाबा को इस यज्ञ को कंप्लीट करना है, इसको संपूर्णता की ओर ले जाना है. But there's different runners, different parts to that. And when I ran relay, I was always the 4th runner, the last runner.
In your school days, you were the fourth runner. Okay. Not now. Maybe now too, I don't know. तो जैसे इन्होंने वो जो रनिंग कंपटीशन है ना उसको बाबा के यज्ञ के साथ कंपेयर किया. बाबा के यज्ञ में भी बहुत सारे रनर्स है, तो स्कूल में हमेशा ये फोर्थ रनर के हिसाब से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे. But each runner had a speciality. So the first runner had a good start. The second runner really kept the lead, ran the straight. Third runner, change in direction, could run curves well. And the last runner had to be very, very, very fast to make sure that they carried the baton home first. Yeah, very nice comparison, really. Very good. तो जो 4 रनर्स होते हैं उनकी हर एक की विशेषता अलग अलग है. जो पहला रनर है वो अच्छे से शुरुआत करेगा, दूसरा रनर है अच्छे से भागेगा, तीसरा रनर है अच्छे से एक कनेक्शन वो जोड़ेगा ताकि वो कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहिए, और जो फोर्थ रनर है उसको बहुत फास्ट भागना पड़ता है ताकि वो लकड़ी को लेके मंजिल तक वो पहुंच जाए. ऐसे ही बाबा के यज्ञ में भी हर एक की अपनी विशेषता है, सबकी विशेषता के आधार पर ये जो है कार्य चलता है. So as the fourth runner for 3/4 of the race, I appear to be doing nothing. I'm just watching my friends run and I am so happy for them. I'm not saying I want to do that part and run over there. I stay where I am and I am so happy for them. And I'm using that time to get ready. I'm not wasting the time. On the surface, it looks like nothing's going on, but internally, I am getting ready. So I'm celebrating their parts and I'm taking care of getting ready for my own part. Yeah, very nice. तो as a fourth runner, माना फोर्थ रनर माना वो व्यक्ति है जो लास्ट में भागेगा, क्योंकि पहले वाले पहले भागेगा, दूसरे वाला दूसरा भागेगा, तीसरे वाला तीसरा भागेगा. फोर्थ रनर माना जब पूरे तीनों ने कंप्लीट किया तब तक इनको वेट करना होता है. देखने वालों को लगता है ये चौथा रनर तो ऐसे ही खड़ा है, बाकी 3 तो भाग रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि फोर्थ पोजीशन में भागने के लिए तीनों को देखते खुशी का अनुभव करते मैं खुद को तैयार कर रही होती हूँ कि जब मेरा टर्न है तब मैं भागूं. So I think for me, the yagya has these phases. We each individually have these phases in our spiritual journey. But if we look at the yagya, the first runners, I don't think any of us can praise enough, appreciate enough those original jewels. Absolutely incredible to get this yagya going. Their renunciation, their recognition, their courage, their faith, the list goes on and on what those original jewels had. They had a good start. Lots of purity. तो जो फर्स्ट रनर्स थे यज्ञ के, जैसे दादियां हैं जिन्होंने यज्ञ को शुरुआत किया, संभाला, आगे लेकर आए, गुड स्टार्ट जिन्होंने किया, उनमें जो त्याग की भावना, उनमें जो हिम्मत थी, उनमें जो निश्चय की भावना थी, वो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बहुत अच्छे से यज्ञ की शुरुआत किया एज ए फर्स्ट रनर्स. The second runner was the generation that expanded Baba's service throughout India. So after those 14 years, start to expand through India, that second wave. So they took everything, very pure, Nijgyan, they took everything and simply ran straight, right? They just sent it out, took it out. Again, incredible courage, power, absolute loyalty to Srimat and to the Maryadas, and they maintained that as they took it out into other cultures through India. Yeah. तो जो दूसरे जो रनर हैं वो जिन्होंने भारत में सेवाओं का विस्तार किया, जो दीदियां हैं फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने उनके लाइफ में बहुत त्याग था, उनके लाइफ में भी तपस्या, सेवाओं को एक्सपेंड करना उनके अपने चैलेंजेस थे. तो सेकंड रनर में आते हैं जिन्होंने सेवाओं को भारत में एक्सपेंड किया, विस्तार किया. And then the third runner was those first double foreigners, right? So they're having to go out into very different cultures. They're going to have to get creative. They're the ones that make the turn, right? Lots of expansion, lots of creativity, still holding the baton,
still holding Srimat and the Maryadas, but going out, we look at the creativity of the double foreigners taking it outside of Bharat. या जो थर्ड रनर है वो डबल विदेशी भाई बहनें हैं, कितना सारा वैरायटी धर्म है, कास्ट है, क्रीड है, सब कुछ होते हुए भी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी देखिए, कितनी नई नई चीजें ये लोग करते रहते हैं। तो जो थर्ड रनर है डबल विदेशियों की जो सेवा है उसमें आ जाते हैं। And now we've reached the time of the fourth runner. They're the Who most is that? Who is that? It's all of us. But you know, I know I think you had Brother Eric share, and he always laughs at me because I talk about the relay race and I say, Canada is a fourth leg runner. I keep saying this. Okay. And the other day he said, I think Judy's right. We are a fourth leg. So the fourth leg runner, you know, their job is to come back to the beginning. Take all that expansion and bring it back to the essence, to the beginning. They are the fastest runners on the team. And in Baba's world, fast means still, silent. The more silent and still you can become, the faster you are in spirituality. So any of us could be a fourth leg runner, you know, and that's also the time in our personal efforts is to go back to those drills, back into that silence. तो जो फोर्थ रनर है वो हम सभी है, हम सभी के ऊपर वो जिम्मेवारी है। माना फोर्थ जो हम सभी है, जो पुरानी दादियों की तपस्या, वो साइलेंस, वो शक्ति, वो हमको वापस अभी लाना है। वो परफेक्शन हमको लानी है। उन दिनों जो शुरुआत के दिन थे वही दिन खुद भी अनुभव करना है और दूसरों को भी वही अनुभव देना है। फास्ट हम रनर्स है क्योंकि इसको हमको कंप्लीट करना है। तो फास्ट रनर माना साइलेंस की शक्ति से, स्पिरिचुअलिटी की शक्ति से यज्ञ को आगे ले जाना है, संपूर्णता की ओर ले जाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फोर्थ रनर। I just have to say, Savita Ben is doing an amazing job translating. Baba is doing. Translate that. No, I won't. So if you look at the yagya, you'll notice we've had 4 different legs of spiritual leadership. It's always Baba. Incorporeal leadership is always one, and that's in the baton. But corporeal, we had Brahma Baba, right? And so that was an incredible start. And then for second, we had, of course, Daddy G, Didi G. Again, remarkable. How much did we hear Didi G's effect on the double foreigners that started to come? Yeah. तो जो स्पिरिचुअल लीडरशिप हमने देखा, यज्ञ को जो निमित्त बनकर के शुरुआत किया, आगे लेकर आए ब्रह्मा बाबा, जिनका कोई और कोई है ही नहीं, जो ब्रह्मा बाबा थे उनके जैसा कोई है ही नहीं। उसके बाद दीदी मनमोहिनी खास करके, जिनका प्रभाव डबल फॉरेनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। Third was Daddy Janki Ji. Baba sent her to double foreign lands. There's not enough time in a day to talk about any of these, but again, another leg of leadership that had to do with international expansion. जो थर्ड लीडरशिप हमने देखा, ब्रह्मा बाबा मम्मा के बाद दादी दीदी के बाद दादी जानकी जी का हमने देखा, कैसे दादी ने पूरे विश्व में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया। But now we look at who is the spiritual leadership appointed by God, Daddy Gulzar. And what is she doing? Silence. अभी स्पिरिचुअल लीडरशिप जिनको बाबा ने चुना है एज ए स्पिरिचुअल लीडर यज्ञ के लिए निमित्त, वो दादी गुलजार है। और दादी गुलजार जी क्या कर रहे हैं? साइलेंस में हैं। To me, I very often remember, because an organization is determined by its leadership, and God has chosen silence as our leadership at this time. अभी के समय के हिसाब से परमात्मा ने जो लीडर को चुना है वो दादी गुलजार जी है और वो साइलेंस में है।
उस लीडरशिप जो साइलेंस के आधार पर चल रहा है समय के हिसाब से, उस लीडर को बाबा ने अभी चुना है, दादी गुलजार जी। This is a bit how we began. You know, there was very little knowledge, but lots of experiences. Now we have to come from a lot of knowledge to the essence, back into that silent experience. And so we're not in isolation. We're not, you know, hidden away from the world. We're in the world, but becoming into that beautiful solitude internally whilst walking and moving around. जैसे दादी गुलजार जी का भी लीडरशिप साइलेंस के आधार पर चल रहा है, हम भी फोर्थ रनर्स हैं सभी, इसीलिए हमको ऐसे नहीं कि अकेले हो जाना है, अलग हो जाना है, दुनिया में ही रहना है, लेकिन उस गहन साइलेंस, गहन शांति जो अभी के समय के हिसाब से ज़रूरत है, उसका अनुभव अभी हमको करना है। ज्ञान कम, लेकिन साइलेंस की शक्ति का ज़्यादा भी हमको यूज करना है। But it's not just the leadership, because the runner is running on the track when the track is in a certain state, whether it's curving or straight. So if I look at the conditions of the world today, we're in a so-called pandemic. जब रिले चलता है ना, आप सभी ने भी बचपन में खेला होगा, कभी स्ट्रेट जाना पड़ता है, कभी कर्व में भी हमको जाना पड़ता है, जो रिले का जो कंपटीशन होती है। अभी जो हम दुनिया की सिचुएशन को देख रहे हैं, कितना ये कोविड का जो असर है बहुत ज़्यादा है। Even the world is helping the fourth leg runner. Right? It's saying, go into solitude. Go Yeah, put a okay. mask over your mouth. ये जो कोविड कोरोना वायरस आया, माना ये जो सिचुएशन है, वो भी फोर्थ रनर हम सभी को हेल्प कर रहा है कि सॉलिट्यूड में चले जाओ, साइलेंस में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, सबसे दूर रहो, मास्क पहनो, ये भी तो समय हमको सहयोग दे रहा है। How much it's been asking us to communicate more and more through the eyes, through drishti. Yeah. ये कोरोना वायरस ने हमको ये भी सिखाया, आंखों से अभी बातें करो, क्योंकि मास्क से तो ये तो बंद हुआ पड़ा है, तो अभी दृष्टि से अभी हमको बात करनी है। Here in the Americas, Caribbean, Mohini Didi, every night for over 5 months has been meeting the region on Zoom and giving spiritual sustenance. It's a marathon. Every day? Every day. Okay. Every day, 7 days a week. तो मोहिनी दीदी जो है न्यूयॉर्क के, उन्होंने वो अमेरिका और कैरिबियन के जितने भी सेंटर्स है उसके निमित्त आत्माएं हैं, 5 महीने से एवरी डे मिलती है और पालना दे रही है। So lots and lots of fuel. And the first point she took up when it started, this what they call avyakti parvar, was the relationship corona, this word karuna or compassion. She was like explaining the relationship between. She was explaining to not think of corona, but whenever you hear corona, think of the word karuna, which means compassion. Okay, okay. तो मोहिनी दीदी ने यही बोला, जब भी कोरोना शब्द आप सुनोगे, वो नहीं सुनो, उसको नहीं अंदर ले लो, करुणा, करुणा माना दया, compassion, उसको उस शब्द में परिवर्तन कर दो। So while the world is very afraid for their physical well-being, Baba keeps sustaining us in being healers, spiritual healers, really focusing on spiritual well-being. So physical falling apart, spiritual becoming more healthy. दुनिया तो परेशान है अभी, जितनी बीमारियां हैं उससे तंग हो गए हैं लोग। एक तरफ से दुनिया परेशान है, दुनिया के लोग बीमारियों से परेशान है, लेकिन बाबा ने हमको क्या बना दिया? स्पिरिचुअल हीलर्स है हम, मतलब आध्यात्मिकता की शक्ति से दूसरों को ठीक करने की शक्ति बाबा ने हमको दिया है। उनका टर्म उन्होंने दिया स्पिरिचुअल हीलर। So not corona, karuna. And
that compassion begins towards the self, right? Spiritual healing. If I'm sick, I can't help anyone. So the minute the pandemic started, so much focus, Baba put so much focus on take care of yourself spiritually. Use this time to take care of yourself spiritually. तो जैसे ही कोरोना वायरस का शुरुआत हुआ संसार में, तो बाबा ने हमको बोला खुद स्पिरिचुअल हीलर बन जाओ, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो दूसरों की क्या सेवा करेंगे. तो सेल्फ केयर, हमको टाइम मिला खुद को संभालने के लिए, खुद को ठीक रखने के लिए, ताकि हम दूसरों की और अच्छे से सेवा कर सकें. So how many of us have experienced Baba's world, our home, that silence as like Baba's operating room. Silence is Baba's operating room. तो आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, कितनों ने अनुभव किया कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, ऑपरेटिंग रूम होता है, वहाँ शांति ही शांति है. तो कैसे बाबा अपना काम शांति से कर रहा है, ये हमने भी अनुभव किया और हम आशा करते हैं आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा. So a fourth leg runner loves silence, not isolation, but inner silence, because it helps them to become very healthy with the eternal surgeon. हम सब फोर्थ लेग रनर है इस कंपटीशन में, रनिंग रेस में. हमको ज़्यादा साइलेंस पसंद है. ऐसे ने दूर चले जाना या अकेले हो जाना, शांति की शक्ति का अनुभव करना, जिससे हम हेल्दी बनते हैं और हम अच्छे रहेंगे तो दूसरों की सेवा कर सकते हैं. So all through these months, I have still been teaching fitness classes. How are you teaching? Baba, Online? yeah. Sorry? It's online? Your classes are going on online? No, they were, but a couple of months ago, we were back in the studio teaching in person. So both online and in person. Since 2 months now. Yeah. Yeah, तो 2 महीने से इनका जो जॉब है वो चल ही रहा है, जो ये सिखाते हैं फिटनेस का. वो पहले थोड़ा ऑनलाइन में चलता था, अभी ऑनलाइन प्लस प्रैक्टिकल दोनों वो काम कर ही रहे हैं अभी भी. So silence for me has not meant staying at home. इनके लिए साइलेंस ये नहीं है कि घर पे ही बैठे रहो, वो शांति है, वो नहीं है. It's been that blessing Baba gave us of combining, balancing silence with activity. So this is, to me, how we serve now, is this healing silence souls desperately need. इनके लिए साइलेंस माने ये नहीं कि घर पे आराम से बैठे रहो, वो नहीं. साइलेंस में रहते उसके साथ साथ काम भी करना है. और साइलेंस माना हीलिंग, दूसरों को ठीक करना, दूसरों के लिए वो कंफर्ट देना, दूसरों की सेवा करना, जो अभी दुनिया तरस रही है वो लेने के लिए. One of the top ways I feel Baba has been helping us is this program, United Yoga Bhakti. Were souls aware of this? I wasn't sure if it was in India as well. The United I have Yoga heard about Bhakti, it. yeah? Yeah. So from mid-April to the end of August, every morning, Baba gave us a drill. Well, it was morning here, maybe not there. तो विदेश में एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया था यूनाइटेड योगा भट्टी के नाम से. मिड ऑफ अप्रैल से लेकर के अगस्त एंड तक बाबा ने हमको ड्रिल दिया. बाबा ने जो मुरलियाँ चलाई, जो ड्रिल्स चलाए बाबा ने, वो होमवर्क के रूप में मिलता रहा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता था. A fourth leg runner loves Baba's drills, right? Because it's as it was in the beginning, so it will be at the end. Brahma Baba did drills too. जो फोर्थ लेग रनर है, जिसको उस रेस को कंप्लीट करनी है, उनको बाबा की जो ड्रिल है वो बहुत पसंद आएगी. क्योंकि जो शुरू में जैसे ब्रह्मा बाबा उन दिनों साइलेंस और ड्रिल का अभ्यास कराते थे, ऐसे ही अभी भी अंत में भी हम सभी जो है, हमको भी ड्रिल्स पसंद है और साइलेंस पसंद है. Baba would say in the drill, in a second, become bodiless.
wherever you are, in a second, become bodiless. तो ड्रिल माना क्या है, आप कहाँ भी हैं, क्या भी कर रहे हैं, एक सेकंड में अशरीरी हो जाना है, यही ड्रिल है। क्या भी आप कर रहे हैं, कहाँ भी आप हैं, एक सेकंड में अशरीरी। In a second is very fast. एक सेकंड में अशरीरी होना मानो बहुत फास्ट अभ्यास है। So you have to be a fast yogi. Yeah, फोर्थ रनर। Yeah. हम फोर्थ रनर है ना, इसीलिए हमको फास्ट योगी बनना पड़ेगा, जल्दी ही एक सेकंड में ही अशरीरी बनना पड़ेगा। फास्ट योगी शब्द इन्होंने यूज किया। So very important now to catch these different signals. You know, Baba's turning into a coach and he's coaching us over the finish line. So Baba is making us as coaches. Coach. You know, a coach is like a trainer. So he's Yeah. training us. He's just like your coach. A coach would train a runner. Baba is training us how to run over that finish line completion. तो जैसे एक कोई भी स्पोर्ट्स में एक ट्रेनर होता है ना जो सिखाता है, ऐसे बाबा अभी हमारा ट्रेनर है, अभी हमारा कोच बाबा है, तो हमको ट्रेन कर रहा है कि फोर्थ आप रनर उसमें पोजीशन में हो, इसलिए कैसे आपको फास्ट भागना है, फास्ट पुरुषार्थ करना है, ताकि जल्द से जल्द इस रेस को कंप्लीट कर सके। There are so many signals in the drama. Daddy Gulzar's silence, the need of the time, the focus on healing at this time. And I think if we listen, our own heart really, really wants to fulfill Baba's hopes and reach that completion. जैसे अभी हम देखते हैं दादी गुलजार जी का जो पार्ट चल रहा है, कितना साइलेंस वाला पार्ट है, दादी बोलती ही नहीं, कंप्लीट साइलेंस में है। तो इसी के आधार पर हम सेवा भी संपन्न हमको करना है, दूसरों की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं हमारे प्रति, वो भी हमको कंप्लीट करनी है। The last thing I'll share is I remember on a relay team, and I actually felt it with other teams, between teams as well. There was such respect and love. So what's really important, if you want to go fast, there has to be purity, no waste. There has to be pure feelings. जो एज ए फोर्थ रनर हमको अपने पवित्रता पर बहुत लक्ष्य रखना है, तभी हम फास्ट जा पाएंगे। ज़रा सा भी वेस्ट है, इम्प्योरिटी है, तो हम वो फास्ट भाग नहीं पाएंगे और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। Can you imagine trying to run fast and you've got baggage and chains and weights dragging you back? Yeah. It's horrible. आप फास्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सिर पर बहुत बड़ा बैग है, बोझ है, तो आप फास्ट भाग नहीं सकते हैं ना। ऐसे ही अगर इम्प्योरिटी है, फोर्थ रनर पोजीशन में हम हैं, हम बहुत ज़्यादा तेज भाग नहीं सकते हैं। So one thing that Mohini Didi has brought back, an inspiration when she offers bhog over and over, what she feels Bap Dada is saying, inspiring, is become light. Be very, very light. Not affected by things. No waste. Be light. जो न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी है, वो वतन में जाते हैं, बाबा का संदेश भी लेकर आते हैं। तो जितने भी मैसेजेस बाबा ने उनके द्वारा दिया है, उसमें मेन बात यही है, लाइट बन जाओ, हल्के हो जाओ, कोई भी बोझ लेकर अभी नहीं चलो, कोई भी व्यर्थ का बोझ लेकर नहीं चलो। So I'm going to cross the finish line here. I'm going to finish here because I'm looking at the time as well. So lovely to share. I have to thank Savita Ben. Your translation is first class. So I will hand it back over. Thanks, to Baba. you. Nice meeting you. It's really Very lovely nice to see you all and see you, Savita. Pleasant surprise. Yeah. बट जहाँ भी सविता बहन आपकी तारीफ की बात आती है, तो आप तो ट्रांसलेटर हो, सो इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू ट्रांसलेट एवरीथिंग व्हाट एवर जूडी सिस्टर इज गोइंग टू आस्क। ओके, तो आप वो बातें तो शेयर नहीं कर रही हो कि जूडी बहन ये कह रही है, वो कह रही है। हाँ,
ये तो चीटिंग हुआ ना, आप क्यों नहीं कह रही ये हो तो गुड कि चीटिंग भाई है, करनी चाहिए, हाँ ये ये चीटिंग चीटिंग करनी है। चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ये चीटिंग भी नहीं करनी, चीटिंग थोड़ी करनी है। तो भाई जूडी बहन कह रही है कि आप बहुत आपका फर्स्ट क्लास पार्ट प्ले कर रहे हैं एज ए ट्रांसलेटर, बहुत अच्छा आपका ट्रांसलेशन है, ये बात सिस्टर जूडी कह रही है। So Sister Judy, thank you for sharing your wonderful experience and for sharing your deep-rooted thoughts about yajna and intense effort to get karmatit before time or on time. So wonderful experience. Thank you. And thank you for sharing. And you mentioned about Judy Roger. So is she at Vancouver or where she is? Judy Rogers is based now in Peace Village. She's connected to the New York family, but Okay, she Peace Village, resides in Peace US. Village. Peace Village, US. Peace Village, USA. Yeah. Okay. Okay, fine. So please share something about Calgary and students over there. How many students, Yeah. how many regular students are there, and something about them. Calgary is very interesting. Sorry? When I grew up in Calgary, it means clear water. And when I grew up in Calgary, there was absolutely almost no Indian population here. तो कैलगरी जिस Now, स्थान पर ये रहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में वहां पर भारत के ज्यादा लोग नहीं थे। now our mayor is in an Indian body. Our sister city is Jaipur. And the family here is growing a lot. We have 2 service places and it's growing a lot. And the vast majority is those from Bharat. अभी जो है यहाँ वहाँ का जो मेयर है वो भारत का है। What was the Jaipur part? Our sister city. So every city, I believe, on the planet has a sister city. Okay. Yeah. So what was that sister city is about? So a sister city is a city that you can share ideas with. You have similar issues. And so it's like a international sharing between 2 different cities. And ours is Jaipur. Jaipur. Mhm. The name of the city is Jaipur. That is our sister city in India. Okay. So Calgary is a sister to Jaipur. Okay, very interesting. माना कितना वहाँ भारत का प्रभाव है, जो ट्विन टाउन ऐसे हम बोलते हैं ना भारत में, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सिटी। तो कैलगरी जहाँ पर ये रहते हैं उसका सिस्टर सिटी का नाम है जयपुर, जो भारत में राजस्थान का कैपिटल है ना, वही। So always feeling there's a secret in the drama, a special bond between, even though we're physically far. But yes, I'd say for regular students, it's a challenge now because some are being born online. But we have probably about 60 to 70 regular students. What's unique is that they tend to come here. They take knowledge in India, and then they come here and they're full-blown BKs. And for whatever reason, they're moving to Calgary, which seems just remarkable to me. तो अभी ऑनलाइन में काफी सेवाएं हो रही है, जो ऑनलाइन में बाबा के बच्चों का जन्म भी हो रहा है, और जो भारत में ज्ञान लेकर के कनाडा मूव हो जाते हैं जॉब की वजह से, या किसी की शादी हो जाती है, कुछ हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चे वहाँ चले जाते हैं, फिर उनकी पालना करने का भी मौका इनको मिलता है। Once they come here, they touch me because they're so fearless. They, I don't know, they do all of these incredible things. Some of them have even become Canadian citizens, but they get jobs, they travel around. We had one brother who came from a small village in India, and he moved to Edmonton, actually, Sanjay, and he loves to go skiing. It's so strange. What's his name? Sanjay. Sanjay, yeah. He lives in okay. Edmonton, about 3 hours away. तो यहाँ से 3 घंटे के रास्ते में एक जगह पर एक संजय करके भारत का भाई रहता है। मैंने भारत वालों की महिमा कर रही कि ऐसे दूसरे देश से यहाँ पर आकर के कितना हिम्मत से अपना लाइफ बनाते हैं, कनाडा का सिटीजन भी बन जाते हैं। तो जो संजय भाई है उसको ऊपर से जो स्कीइंग बोलते हैं ना, Skiing. वो He's करने broken his leg skiing. हाँ, वो उसको बहुत पसंद है, तो हिम्मत दिखाते हैं हर चीज में।
उनका पाँव भी टूट गया फिर भी वो करते रहते हैं स्कीइंग. So always feeling Baba has some special purpose for these souls in terms of coming this far, studying here. You know, and Daddy Genki came here to Calgary when I was 1 or 2 years old in Guyana. And she said, she looked at Calgary and said, this place will become an international pilgrimage place of peace. तो जानकी दादी जी जब गए उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि ये जो जगह है इंटरनेशनल तीर्थ स्थान बनेगा, शांति का अनुभव कराएगा. तभी उनको वंडर लगता है कि कैसे बाबा के बच्चे भी अलग अलग स्थानों पर वहाँ पहुँच जाते हैं, बाबा की सेवा में मददगार बनते हैं. Calgary is located physically in probably one of the, some say it's heaven here. It's still very pure, very clean, good quality of life in every way. So, you know, it's got a very peaceful vibration. ऑलरेडी वहाँ पर जैसे स्वर्ग का वातावरण जैसा है, पीसफुल है, क्लीन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीते हैं वो भी बहुत अच्छा है. तो ऑलरेडी सिटी भी बहुत अच्छी है जहाँ पर शांति का अनुभव होता है. So we'll see what Baba does here, but I can certainly very happily extend to any and all of you an invitation to come and visit anytime. देखते हैं यहाँ. Not now. Sorry? Maybe not now because of travel Not problems. now, yeah. तो मैं यही आशा करती हूँ कि बाबा क्या यहाँ पर करता है, देखते हैं. आप सभी को भी हार्दिक निमंत्रण है, जब भी जाना है जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जाना, बाद में जाना है, सब ठीक होने के बाद. Always welcome. Okay. I think Calgary is capital of Alberta. Is it right? It is not actually. Not? Edmonton is. Yeah, no, but you know, many think it is. Okay. I don't know why, but Edmonton is the capital of Alberta. I'm impressed, actually, that you know any of them. But yes, Edmonton, 3 hours away. Calgary is a very popular city in the province. Yeah. But Alberta is very cold, I think, right? It can be very cold. Yeah, so I don't want to frighten anyone, but we can get down to minus 40 degrees Celsius. Minus So maybe 40. you don't want to come in. Yeah, minus 40 तक वहाँ पर टेम्परेचर, इतनी ठंडी वहाँ पर रहती है जहाँ पर सिस्टम. What is the temperature now, or how the weather is like? Today, I believe it's going to be 19 degrees Celsius. It's somewhere So there. it's warm. Okay. अभी 19 डिग्री है वैसे टेम्परेचर, अदरवाइज ठंडियों के दिनों में -40 तक चला जाता है. Interesting place. And I think in Alberta, oil and gas industry is very developed there, right? Yeah, this part of the world is built on oil and gas. So obviously that means it's a roller coaster, right? But there are some definitely very wealthy people here and also very, very poor. But yeah, we're very tied to oil and gas. So we always talk about the resources of the planet, and then Baba tells us about our natural resources inside. Okay. So they have set pipeline, oil and gas pipeline from Alberta to US. They are supplying, right? How do you know all of this? He has got I should very come to good you if I have questions. It's true. His son lives in Canada, I think. Isn't it, Bhaiji? Sorry, yeah? आपका बेटा कनाडा में है ना? Newfoundland. Yeah, his son lives in Canada. But not not at Alberta. It's at Newfoundland. Very far from Alberta. Is this Rushi? Yeah. Oh my goodness, Rushi! Oh, how lovely. That is one courageous soul. He is from Vadodara. Rushi is from Vadodara, okay? Oh, lovely. So nice to meet you. Yeah. So that's a little far away from us. Canada is the second largest country on the planet. Yeah. So it's very spread out. First is, so that means that we have to which work. Which is the first largest country? It's Russia. Russia. Yeah. Russia. Okay. Yeah. वो पूरा फ्रोजन बेल्ट है और ये भी कुछ इस तरह से ही है करीब. इनके जो बेटे हैं उनको सिस्टर जानती है. मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ अभी.
जी जो जी मिनिश भाई का जो बेटा है ऋषि भाई, उनको सिस्टर अच्छे से जानती है और वो भाई की महिमा भी कर रही है। ये ट्रांसलेशन आपने कर दिया, आपका तो नहीं किया। तो जैसे ही युक्ति से थोड़ा चलो अच्छी बात है। जी। ठीक है। ओके भाई और बहनों, किसी को कुछ कहना है भले आप कहे या पूछ सकते हैं हिंदी में। और प्रोड्यूस सुमन, दिस इज नरसी दादा फ्रॉम टोरंटो सिस्टर। No, wow. Om Shanti. बहन जी ने जो अभी बताया वो सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि इंडिया में कैसे कैसे नॉलेज देने वाले बाबा की देन से ऐसा नॉलेज दे सकते हैं। इनकी समझ में भी नहीं आ सकता ऐसा नॉलेज उसने अभी बताया। तो हमें सोचना चाहिए कि कैसी कैसी मेहनत करके हमको अभी बताया उसने। और जो ट्रांसलेशन बहन ने किया, सविता बहन ने, वो तो गजब किया। तो मैं बहुत बहुत मेरी हर्ष का आंसू आता है मेरे को। He's just appreciating whatever you have shared, the way you compared that with that race, you know, relay race and all. So he's very happy. ओके चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। सो सिस्टर वी विल मेडिटेट। ओके अशोक भाई को कुछ कहना है। हाँ अशोक भाई बोलो। जो डॉक्टर साहब भी आ गए। सिस्टर ओम शांति, बोथ सिस्टर्स। Both sister Om Shanti. बहुत भाग्य बना रही हो अपना। जी 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 लोगों की दुआ। And Sister Judy has shared her experience very excellently, nicely, and we are seeing in front of us one very best spiritual model. Oh, which we must you've really touched my heart. That's what I hope to be. and so many things from Thank you, our, Baba. yes, spiritual model. And other thing you have in a nice way. What a nice way you have explained the relay race. That is the we all come. We all like me people all come in the last runner, fourth runner, and it is a great responsibility on the last runners. Yeah. Which makes the team to win at the last end. And Baba also said in the Murli that last so fast. So that we must see. And now this is the very good explanation you have given. This is nicely told. And thank you very much. You're a very wise soul to what you've added. It's You could very able to good. get it. I will ना, steal it. अब बहुत समझदार है, पॉइंट को आपने कैच किया. Okay. So Sister Judy, do you sing? Do you sing? No, but when you have Sister Tanya, make sure you ask her to sing. Yes. Okay. She sings beautifully. Make sure you ask her to sing. So you are not singer, okay? No. You don't want me to sing. You have very nice voice, okay? Actually, I am thinking you should record Amrut Vela commentary. Okay. You I will put that up to 40, Baba. please record 45 minutes Amrut Vela commentary, of course in English, and you share it with me. I will make proper video and upload to YouTube. Okay. Wow. So prepare Amrut You're Vela very commentary. talented. Yes, he is. Because your voice is appealing, and particularly for Amrut Vela, so please prepare one first-class commentary. Okay. Acha, Dr. happy to. But make sure you ask Sister Tanya to sing. Yes, Okay, I will do that. sure. अभी मैं भूल जाऊं तो सविता बहन आपकी जिम्मेवारी, आप याद दिला Sure, देना, it's my ठीक है? responsibility. Okay. I have shared my responsibility with Savita Ben. You're also a very wise soul. Okay, Dr. Saab. Dr. Saab. Om Shanti. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जूडी, लास्ट रनर बट फर्स्ट रनर, और साइलेंस लवर,
lover of silence. Yeah. Thank you for giving nice silence power to us, and we will always remember you when we will sitting in the silence world. Okay, thank you. Dr. Saab, in the absence of Champa Ben, you have to invite her. Now, today, it's your duty because Champa Ben is not available right now. Dr. Saab? Now, Uh, there are few guests, so she uh, is with. That's why I'm asking you, please invite her whenever she visit Madhuban. So वडोदरा के लिए आप invite करिए. They're inviting you to Baroda Center when during your Very next nice. visit. Wow. Very nice. Happily. I look Do forward to come more to Baroda. time. Do come to Baroda. Acha. Acha, she will. And Okay. we will be meeting you all will be meeting you, and Rusi's father, Minesh, and mother, Hemani Ben, they are there with us. No, you know them now. Yeah. You've seen them. Yeah. They are the parents of Rusi. Amazing. See, we have a connection, Yeah. Canada. That you mentioned. So Rusi Very. also is lovely here among Mm. us. It's very nice to be with all of you. Really, really nice. I think it's very beautiful how Baba's drawing all the children so close. And all got connected with Shantivan today, with Madhuban. Yeah, yeah, I that's get right. it. And we will continue to be, I'm sure. Yeah. Okay. Okay. चलिए अभी समय भी हो गया है तो अब 2 मिनट में हम पूरा करेंगे 2 minutes. Okay. Om Shanti.